Assalamu alaikum. Okay, ji, in mechanics, today we are going to start our third topic, chapter number 3, which is Newton's law. Okay, chapter number 3, Newton's laws, जिसमें से हमारा जो बेसिक जो लॉ इसमें यहाँ पे यूज होना है वो न्यूटन सेकंड लॉ है. एंड व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? कि इफ यू apply a force on an object, under the action of that force, that object produces an acceleration, वो move करता है किसी एक direction में, then in that case the product of mass and acceleration is the force. So it is force is equal to mass times acceleration, mean F is equal to ma. And ये जो F है, this force is basically the net force. This force is basically net force. So net force is equal to ma. So ये है जो बेसिक लॉ जो कि हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम बार बार अप्लाई करेंगे. And how will you find what's the net force? So definitely एक तो major difference between chapter 2 and chapter 3 में क्या होगा? Chapter 2 में throughout we were studying कि object was in equilibrium. So जब object equilibrium में है chapter 2, और जैसे ही object move कर रहा होगा, so it means chapter 3. So chapter 3 mean Newton's law. Or if the object is moving, so definitely we need to apply F is equal to ma. And what is net force? Net force is basically forward force minus backward force. तो आप इसको क्लियर लिख सकते हैं, forward force or maybe forces minus backward force, or there can be multiple forces. So net force is equal to ma, mean forward forces minus backward forces is equal to ma. So जो कुछ आपने चैप्टर 2, अगर आपका चैप्टर 2 अच्छा है तो चैप्टर 3 में प्रॉब्लम नहीं होगा. एक क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आपने जिस तरीके से चैप्टर 2 में कंप्लीटली डायग्राम अपनी लेबल करते थे, मीन आप सब फोर्सेस जब लेबल कर लेते थे, सो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना था? इक्विलिब्रियम का केस था, यू वर राइटिंग राइट इज इक्वल टू लेफ्ट एंड अप इज इक्वल टू डाउन लाइक दिस. अब क्या होगा? अब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूविंग, इट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल एक जनरल केस में लेता हूं. देयर इज अ ब्लॉक लाइंग ऑन दैट टेबल. The mass, there's a weight acting on the of that block. Weight is acting downward, W. What's the normal contact force? So normal contact force will be vertically upward like this, R. अगर इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की, which is say F1, this is the external force basically we have applied. Or the surface is rough. अगर surface rough है, so there will be a friction as well. So what will be the direction of friction? It will be towards left. So friction को suppose मैं F2 से FR चले कर लेते हैं, friction FR. And overall the object is moving towards right, definitely.
जब आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स F1 अप्लाई की तो इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो पहले जब ये इक्विलिब्रियम में हुआ करता था तो हम क्या लिखते थे, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, F1 इज इक्वल टू Fr लिखते थे उस वक्त। और वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम मीन R इज इक्वल टू W। बट अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो नाउ यू विल अप्लाई हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, इट विल बी नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। और ये नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, F1 माइनस Fr या Fr माइनस F1। I wrote in the previous page, on the previous page, net force is basically forward force minus backward force. And if the object is moving towards right, then the forward force will be F1. So उसके against जो force होगी वो backward force होगी. So in this case, your forward force is F1 minus your backward force is Fr is equal to MA. आपको mass given होगा वो M लिख देंगे, जो information given होगी वो put कर देंगे। अभी तो मैं general form लिख रहा हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन बनी। बताइए व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर वर्टिकल। क्या वर्टिकली भी हम कहेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जिस तरह हॉरिजॉन्टल के लिए आई हैव रिटन नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वर्टिकली क्या ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप या डाउन मूव कर रहे हैं मरियम? नो, although object is in equilibrium but object vertically up या down move नहीं कर रहा, object right left move कर रहा है, so vertical forces are still in equilibrium। सो वर्टिकल फोर्सेस पे अभी भी चैप्टर 2 वाला रूल इक्विलिब्रियम वाला अप्लाई करेंगे। मीन अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, मीन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। इसी तरीके से अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाता है उसकी भी कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose this is the inclined plane, this is the block. The inclined plane is at an angle theta. This is weight. What is the direction of normal contact force? It is perpendicular to the inclined plane. So normal contact force की direction will be like this. Suppose parallel to the inclined plane हमने F1, and further suppose it is given कि the surface is rough, so definitely there will be a friction। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि the block is moving up the plane, this is given, the block is moving up the plane because of that friction F1 force। So what's the direction of friction force? Down the plane। So suppose we have labeled all the forces, what should be the next step? Sorry, रिजॉल्व करना है। हमने किस फोर्स को रिजॉल्व करना है? वेट के कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व करना है। सो लेट्स रिजॉल्व वेट। सो वेट की टेल से हमने हेड की तरफ आना है। सो दिस इज वर्टिकल। हमारी जो रिजोल्यूशन होनी चाहिए, जो रिजॉल्व करेंगे, इट शुड बी पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। और फर्दर वी नो दिस एंगल, व्हाट इज दैट एंगल? दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि वो अगर थीटा है, so this is also theta, and if this is theta, angle के opposite is always W sin theta, and this is W cos theta। And I told you कि the object was moving up the plane। So अब object again move कर रहा है। So what will be the, what will you do with the forces which are parallel to the inclined plane? क्या वो इक्वल होंगे या नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई करें? जी रिदा, the forces which are parallel to the plane, are they in equilibrium or we have to use net force is equal to ma? Because it's moving, so net force is equal to ma, so net force is equal to ma।
And Samra, what is the net force? The object is moving up the plane, right? And we know net force is forward force minus backward force. जी, so net force होती है forward force. तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती है those are basically forward forces. So it is moving up the plane, so F1 is the forward force. So F1 is a forward force, and there are two backward forces, FRB or W sine theta B. So minus FR minus W sine theta is equal to MA. So this is the equation parallel to the inclined plane. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन एक मान गई. अब आप बताइए, व्हाट अबाउट द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन? व्हाट अबाउट दीज फोर्सेस? क्या इसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे? यस और नो? नो, बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो फोर्सेस हैं दे आर स्टिल इन इक्विलिब्रियम. ऐसे ही है ना मरियम? सो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगी. तो upward it is r and downward is w cos theta. So you will get r is equal to w cos theta. आप अगर देखिए चैप्टर 2 में जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था आपके पास टू इक्वेशंस बन रही थी. अब भी टू इक्वेशंस बन रही हैं, लेकिन उस केस में दोनों में इक्विलिब्रियम में था, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल डाउन करते थे. लेकिन अब एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द प्लेन मूव कर रहा होता है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करनी है. और परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्सेस का सम नेट सम जीरो होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन को इक्वल कर देंगे. तो अब भी टू इक्वेशन बन रही हैं. और इसके अलावा अगर कोई थर्ड इक्वेशन बन सकेगी तो वो कौन सी बनेगी? F is equal to mu r. And what is F? Limiting friction. और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस वक्त फ्रिक्शन हमेशा होती ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है. सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर इसी तरह किसी क्वेश्चन में यूज हो सकेगी. जी क्लियर है? सो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन की है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए. अगर आप देखें तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है. थोड़े से पुली के क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो फिर आपका काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा प्रीवियस टॉपिक से. लेकिन अभी तक डिफरेंस कोई नहीं है. जो आप अगर आपका चैप्टर 2 अच्छा है तो इट मींस आपका ये चैप्टर 3 भी हो जाएगा. सिर्फ इक्विलिब्रियम का डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस आ रहा है मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट. तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके. इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे
इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पुली वाले क्वेश्चंस हम कल करेंगे। अभी हम विदाउट पुली के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। सारी पुली वाले नजर आ रहे हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए। A block of mass 3 kg is initially at rest on a rough horizontal plane. Rough horizontal plane. A force of magnitude 6 Newton is applied to the block at an angle of theta above the horizontal, where cos theta is 24 by 25. The force is applied for a period of 5 seconds, during which time the block moves a distance of 4.5 meter. Find the magnitude of the friction force on the block. So if we see that this is suppose the block, this is the horizontal plane. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और फोर्स क्या हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और उसके बाद जो यहाँ पे ब्लॉक है, सपोज दिस इज द ब्लॉक, इसका mass is 3 kg, so let's label all the forces. So weight is acting vertically downward, कितना, 30 Newton. A force of magnitude 6 Newton is applied to the block at an angle of theta degree above the horizontal. So a force is applied, and what is that force? 6 Newton force is applied, and the angle is, this angle is theta. The force is applied for a period of 5 seconds, mean time is 5 seconds, or distance traveled is 4.5 meter. You have to find the magnitude of the friction force on the block. जी, कैसे find करें magnitude of friction force? Magnitude of friction force. क्या सब फोर्सेस लेवल हो चुकी हैं? कौन सी फोर्स रहती है जो कि हमने लेवल करनी है? R. और इसके अलावा फ्रिक्शन. So this is R. What's the direction of friction? Towards left. So ये F is friction. और हमने 6 न्यूटन फोर्स को फर्दर क्या करना है? We need to resolve this. So 6 न्यूटन फोर्स को आप रिजॉल्व भी कर लीजिए. So opposite to theta is 6 sin theta, and this is 6 cos theta. 6 sin theta, 6 cos theta. ओके, ये बताइए अगर आपके पास cos थीटा 24/25 है तो बताइए sin थीटा क्या होगा? अब ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, हमें पता होना चाहिए. बताइए sin थीटा क्या होगा? सॉरी, 7/25 बता रहे हैं अहमद. मरियम बताइए ये 7/25 कैसे बता रहे हैं?
समरा, हाउ टू फाइंड साइन थीटा, और हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मैंने कंप्लीट किया और कुछ लोग कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बहुत से मैंने 2 मेथड्स बताए थे, अगर उनमें से कोई भी अगर मेथड अगर आपको याद हो, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू डिड इन P1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So from that, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So sin theta is equal to under root 1 minus cos square theta. So ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आपको cos square theta given है, so it is under root 1 minus 24 over 25. कैलकुलेटर यूज कीजिए, you will get the value of sin theta. So under root 1 minus 24 by 25 square, 7 by 25. So we got value of sin theta is 7 by 25. So sin theta अगर कहीं चाहिए हुआ तो हम लिख लेंगे 7 by 25. चलें जी, हम फोर्सेस सब लेबल कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? फोर्स क्योंकि राइट साइड पे लग रही है, राइट साइड पे मूव कर रहा होगा। सो बताइए व्हाट इज द नेट फोर्स यहाँ पे? Net force is equal to ma. Samra, what's the net force here in this diagram? See, tell the what's the net force. 6 cos theta is the forward force minus F is equal to ma. Mass is 3, acceleration nahi given. Do we know cos theta? Yes. So cos theta is 24 by 25. So अगर आपको ये F कैलकुलेट करना है, अगर ये आपको F कैलकुलेट करना है, it means you should have A. Now where to get A from? Chapter 1 kinematics. You have time 5 seconds, distance 4.5 seconds, और उसने कहा था कि initially at rest. So you have 3 informations. हमें 3 informations चाहिए होती हैं, और वो 3 information mean U is 0. We have 3 informations. So आप इन 3 informations को यूज कीजिए और एक्सेलरेशन फाइंड करें। कौन सी इक्वेशन से आएगी एक्सेलरेशन? S is equal to ut plus half at square. S is 4.5. Initial speed is 0. Half acceleration is find करनी है, and time is 5 square. So you will get the acceleration here. 9 by 25. अगर क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है तो बेहतर आप एग्जैक्ट लिखें, डेसिमल में लिखने की जरूरत। 9 by 25. So use this acceleration here, you will get F. So 6 into 24 is 24 into 6 is 144. ओके, जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यू विल गेट F 4.68. 8 के बाद एग्जैक्ट आ रहा है, जबरदस्त। So friction force is 4.68. F is equal to 4.68. जी क्लियर है? सो देखिए, दिस इज द बेसिकली मिक्सचर ऑफ दिस टॉपिक एंड चैप्टर 1. इस चैप्टर 3 में आपका चैप्टर 1 में काइनेमैटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा और इक्वेशंस ऑफ मोशन स्पेशली। जी पार्ट 1 क्लियर है? लेट्स सी व्हाट इज पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन।
See the statement of part 2. It says, show that the coefficient of friction between the block and the plane is 0.165. Correct to 3 significant figure. जी म्यू फाइंड करना है. हम ये प्रीवियस चैप्टर में म्यू फाइंड करते रहे, तो कौन से फॉर्मूले से म्यू फाइंड होगा? F is equal to mu r. So we want to find mu. जी F is equal to mu r के थ्रू. So already we have the value of F. F तो है हमारे पास. How to find R? R30 काश ऐसा होता. R plus 6 sin theta is equal to 30. So although the object is in motion, but vertical forces are still in equilibrium. So vertical forces equilibrium में होंगी, mean upward forces is equal to downward forces. और upward कितनी है? 2 forces, R and 6 sin theta. तो अब आप इसके लिए सेकंड पार्ट की इक्वेशन आपकी बनेगी R plus 6 sin theta is equal to 30. और we have the value of sin theta. तो हमने फाइंड की हुई है 7/25. What's the exact answer for R? 0.32 एग्जैक्ट आ रहा है. 28.32. सो हमारे पास R आ गया, और जब आपके पास R आ गया तो वी नो द रूल F is equal to mu R. So mu is equal to F 4.68 and R is 28.32. So 0. So उसने कहा था प्रूव करें कि करेक्ट टू 3 significant figure. The value of mu, mean the coefficient of friction, is 0.165. जी क्लियर है ये? सो सिंपली वही चैप्टर 2 की तरह फोर्सेस सारी लेबल होनी चाहिए. जस्ट इक्विलिब्रियम का केस रिमूव हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा. इसी का एक थर्ड पार्ट भी है. See, the third part of this question is, when the block has moved a distance of 4.5 meters, the force of magnitude 6 Newton is removed. Previous part में जो distance दिया हुआ था 4.5 ही given था. Okay. Mean after the object has covered a distance of 4.5 meter, now the force of magnitude 6 Newton is removed and the block then decelerates to rest. Find the total time for which the block is in motion. Find the total time for the block for which the block is in motion. वो हमने time find करना है. So कैसे करें? Let's do that. अगर वही डायग्राम हम वापस ले आए. सर Yes. सर इसमें क्या वो एक्सेलरेशन का टाइम इंक्लूड करना है या फिर खाली डीसेलरेशन का है, जब डीसेलरेट कर रहे होते? उसने कहा है फाइंड द टोटल टाइम. सो सारा टाइम करना है हमने. ओके एक्सेलरेशन वाला भी और फिर डीसेलरेशन वाला भी, ये सारा टाइम. रेज हो जाओ. ओके जी, जरा क्वेश्चन का सिनेरियो समझिएगा. सपोज यहां से लेकर इधर तक जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज 4.5 मीटर, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज ट्रेवल्ड अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 6 न्यूटन. लेकिन इसके बाद फर्दर जो डिस्टेंस होगा उसको मैं रेड कलर में शो करता हूं. ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है रेड कलर में, इस पे
एक्सटर्नल फोर्स जो 6 न्यूटन थी वो रिमूव हो चुकी है। सो जब 6 न्यूटन फोर्स बेसिकली फॉरवर्ड फोर्स जब रिमूव हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता डीसेलरेट करते करते रेस्ट पे आ जाएगा। मीन यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0 होगी। सो हमें ये टोटल टाइम फाइंड करना है। सो टोटल टाइम, पहले पर्पल वाला टाइम तो हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें तो हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है। इनिशियल स्पीड भी 0 है, डिस्टेंस 4.5 है, टाइम 5 सेकंड था, और आई थिंक हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट की हुई है। सो आप सिर्फ पहले ये पर्पल वाला जो टाइम है वो तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल स्पीड नहीं, फाइनल स्पीड हमारे पास इससे टाइम फाइंड कर, अच्छा टाइम तो गिवन है 5, हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, सॉरी। सो टाइम तो पर्पल वाला हमें क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 5। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है इस सेकंड पैच पे, रेड कलर में जो शो हो रहा है, पिंक कलर में जो शो हो रहा है, तो उसमें आपको 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन? इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं, फाइनल 0 है। चलिए इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं, ये वो फर्स्ट पैच की जो फाइनल होगी वो सेकंड पैच की इनिशियल बन जाएगी। सो चले वो तो कर लेते हैं। v इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, ये मैं अप्लाई करूं इस पर्पल वाले पैच के ऊपर, वहां से फाइनल स्पीड तो हम कैलकुलेट करेंगे। सो u was 0, एक्सेलरेशन क्या थी 9/25, and time was 5. So what's the speed? नहीं, 9/5, 1.8। सो यहाँ स्पीड पता चल गई 1.8, लेकिन अभी भी वी आर शॉर्ट ऑफ वन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए यू नीड 3 इंफॉर्मेशन। इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है। नाउ वेयर टू गेट द थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम? चैप्टर जो चल रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वहां से एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए। सो बेसिकली जो चैप्टर 1 है काइनेमेटिक्स और जो चैप्टर 3 है, इन दोनों में जो लिंक है वो एक्सेलरेशन का है। मीन इस चैप्टर में से एफ इज इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन हो सकती है, और वो एक्सेलरेशन आप चैप्टर 1 की कैलकुलेशंस मीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज कर सकते हैं। सो अब आप बताइए व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस पैच? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। आप बताइए what's the net force in this patch? What's the forward force? 0, there is no forward force. What's the backward force? Backward force तो फ्रिक्शन अभी भी होल्ड का ही, और वो हमने कैलकुलेट की हुई है। What was that? 4.68। So forward force कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन है 4.68 इज इक्वल टू ma। इसका मास कितना था 3। So from here you will get that deceleration minus 1.96, 1 minus 1.56। सो हमारे पास डिसेलरेशन आ गई इस पैच की। मीन वी हैव नाउ 3 इंफॉर्मेशन। सो अब आप किस इक्वेशन से आप करेंगे टाइम? v is equal to u plus at। So final speed has 0, initial speed is 1.8, acceleration minus 1.56, and time अब आप बताएंगे। वो क्या आ रहा, एग्जैक्ट नंबर बन रहा है 15/13, और वो चलें अभी 15/13 क्योंकि मैंने इसको आगे ऐड करना है। सो ये टाइम आ गया 15/13 मीन 1 पॉइंट समथिंग। सो व्हाट्स द टोटल टाइम? सो टोटल टाइम इज 5 प्लस 15/13। इसका बताइए आंसर। 80/13
ये एग्जैक्ट होगा। और आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए क्या बता रहे हैं। सो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट्स 3 कैसे हो सकता है? 5 में ऐड कर रहे हैं, कुछ कम कैसे हो गया? सर 6.8415. So this is the time, total time correct to 3 significant figures, 6.15 seconds. जी क्लियर है? तो ये बेसिकली स्टार्ट था आपका चैप्टर 3 का। इसमें मेन डिफरेंस आपने देखा कि न्यू इक्वेशन यूज हो रही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अदरवाइज बाकी सब कुछ वही, चैप्टर 2 वाली फोर्सेस लेवल करनी या चैप्टर 1 वाली मैकेनिक्स यूज करनी। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो चैप्टर 3 में क्वेश्चंस आते हैं पुली वाले, सो हम उन पुली वाले क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। सर थैंक ये यू सो क्वेश्चन मच। दिखा दें थैंक यू प्लीज। सो मच। सॉरी क्या कह रहे हैं? सर ये क्वेश्चन दिखा दें एक बार। क्वेश्चन दिखा दूं मतलब कि थर्ड पार्ट? देखो ये थर्ड पार्ट आपके सामने है, मैं पार्ट 1 आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, जी सर ओके। फिर ये इसका सेकंड पार्ट था। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।